हेलो, नमस्कार, नमस्ते, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। हाउ आर यू? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। तो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सर, when a body is subjected to equal and opposite pulls, as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain included are? Okay. So बच्चा, it will be tensile stress and tensile strain. Okay बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, डैश इज अ बीम with one end fixed and other end simply supported. क्या बोलेंगे इसको? ट्राई करिए। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। सो बच्चा, इट इज कॉल्ड प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? इसको बोलेंगे अपन लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। चलो सर, the hoop stress developed in the thin cylinder is given by where P is the internal pressure, D is the internal diameter and T is the thickness. याद करिए। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप लोगों के दो फॉर्मूला होते हैं। सर, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज गिवन बाय पी डी बाय 4t एंड हुप स्ट्रेस इज गिवन बाय पी डी बाय 2t। और कौन सा वाला ज्यादा है? ऑब्वियसली आप लोगों का हुप स्ट्रेस या सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस ज्यादा है। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। सो द हुप स्ट्रेस डेवलप्ड इन द थिन सिलेंडर इज गिवन बाय पी डी बाय 2t। याद रहेगा।
ओके, चलिए इसको ट्राई करिए, ये आप लोगों को पता है कि नहीं? सर, अ कार्बन स्टील बॉल having a Brinell's hardness number 100 should have the ultimate tensile strength closer to, ट्राई करिए बच्चा। वेरी गुड। Sir, S ultimate is equals to 3.5 times the Brinell's hardness number. This is for carbon steel. याद रहेगा, याद रहेगा। सो 3.5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चा अगर देखना हो तो ये देख लीजिए, ये अपनी क्लास नोट्स में भी लिखा हुआ है। शैलेश सर जब पढ़ाते हैं तब पूरा पढ़ाते हैं। सर, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ for low and medium carbon steel is 3.45 times the Brinell's hardness number, but average आप लोग 3.5 लेके भी कर सकते हैं। and for low and medium carbon steel तो याद रह जाएगा, but for cast iron it will be 0.98 times the Brinell's hardness number in the megapascal, याद रहेगा। चलो try this out. Its alpha is the coefficient of thermal expansion, and delta T is the magnitude of change in temperature, and E is the modulus of elasticity. Then the expression of the thermal stresses induced in the rod of length L that is fixed between two rigid end is given by. क्या हो गया? सो बच्चा आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला और स्ट्रेन का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दैट फॉर थर्मल स्ट्रेसेस, मेरा पेन गिर गया, वैसे काम नहीं कर रहा है। द थर्मल स्ट्रेस इज गिवन बाय अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, एंड थर्मल स्ट्रेन इज गिवन बाय अल्फा डेल्टा टी। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, बोलिए। ओके, सो ये रिजिड एंड के बीच में हो या कुछ भी हो, केस यही आएगा। यस, ये आएगा। वेरी गुड। चलो सर, द एबिलिटी of the material to resist the deformation or deflection under the stress is known as, ट्राई करिए बच्चा।
वेरी गुड, वेरी गुड. सो बेसिकली होता क्या है सर, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन अंडर स्ट्रेस इज नोन एज योर स्टिफनेस. क्या कहा जाता है बच्चा उसको? सो बेसिकली आप लोगों का स्टिफनेस का डेफिनेशन क्या होता है सर? इट इज लोड पर डिफ्लेक्शन, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन. ओके, याद रहेगा. सो डिफ्लेक्शन तो यूनिट लेस है, तो आप लोगों का के का जो यूनिट है वो लोड का ही यूनिट हो जाता है. याद रहेगा, इट्स नॉट टफनेस. ओके, इट्स नॉट टफनेस, इट इज स्टिफनेस. याद रहेगा. आगे बढ़े, अच्छे क्वेश्चन है. चलो सर, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ ले. सर, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी? व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी? सर, द रिजिड बॉडी इज द वन जिसके लिए आप लोगों का एलोंगेशन जीरो होगा. एलोंगेशन जीरो है तो आप लोगों का स्ट्रेन जीरो हो जाएगा. अब यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है दैट इट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सो स्ट्रेस अपॉन जीरो, सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो वो हमेशा इंफिनिटी देगा. देगा कि नहीं देगा? सो द यंग्स मॉड्यूलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी विल बी इनफिनाइट. याद रहेगा. ओके, याद रहेगा. चलो ट्राई दिस आउट. सर, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड. सो बच्चा, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ. सो दिस क्वांटिटी इज यूनिट लेस. याद रहेगा आप लोगों को, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस. आगे बढ़े. चलो सर, द पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन. ट्राई करिए. श्योर. सॉरी. श्योर. सो बेसिकली आप लोगों का पॉइजन रेशियो होता क्या है सर? द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन अपॉन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सही है बच्चा. So theoretically, the Poisson's ratio is from -1 to 0.5, but practically mu can never be negative, so it is 0 to 0.5. अच्छा, जीरो किसके लिए होता है सर? जीरो कॉर्क के लिए होता है. और पॉइजन रेशियो जीरो होने का मतलब क्या है?
सर आप लोगों का लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन के बराबर, हाँ या ना, कि नहीं, कि नहीं? ये गलत लिख दिया है मैंने, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। मेरा पेन कहाँ है भाई, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, मेरे को पेन लेना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट दीजिए मेरे को। ओके चलो, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। सो बच्चा, फॉर दिस द लेटरल स्ट्रेन विल बी जीरो। जिनका पॉइजन रेशियो जीरो है, अपन लोग क्या बोलेंगे, उनका लेटरल स्ट्रेन जीरो है। याद रहेगा, याद रहेगा। एंड 0.5 किसका है, रबड़ का है। सो फॉर द मटेरियल विच इज हैविंग पॉइजन रेशियो 0.5, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज जीरो। याद रहेगा। एंड फॉर मेटल्स इट इज फ्रॉम 1/4 टू, यू कैन से 1/3। याद रहेगा। चलो sir, a metallic cube is subjected to equal pressure P on its all the six faces. If the volumetric strain produced is epsilon V, then the ratio of P by epsilon V is given by, try करिए बच्चा। तो बच्चा क्या हो गया? So बच्चा, the ratio of the linear stress upon linear strain is called modulus of elasticity। ये तो बच्चा क्वेश्चन है। ओके चलो, इसको ट्राई करो जल्दी से। हाँ एक मिनट, ये अलग था ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी सर। ये आप लोगों का क्या हो जाता है सर, द ऑलवेज रिमेंबर बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू द डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हाँ या ना? डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, याद रहेगा। सो द आंसर विल बी बल्क मॉड्यूलस, इसका तो डी हो जाएगा। ये वाला ट्राई करिए।
सो बच्चा आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के इलास्टिक मॉड्यूलस का सबसे फेमस फॉर्मूलाज में से एक E इज इक्वल्स टू 3K 1 - 2 म्यू। सो बच्चा म्यू की जगह कभी कभी 1/m भी यूज होता है, सो दिस विल बी 3K 1 - 2/m। देखिए ध्यान से, हाँ या ना? सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो बच्चा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाता है? Sir, the factor of safety is defined as the ratio of the ultimate stress upon the working stress। हाँ या ना? हाँ या ना? तो कभी कभी इसको आप लोगों का अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन द डिजाइन स्ट्रेस भी है। चलो इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो। Sir, if the material has numerically the same value for its modulus of rigidity and bulk modulus, then what is the Poisson's ratio? ट्राई करिए बच्चा। ओके, क्या हो गया इसका आंसर? So बच्चा we know that very well, E is equals to 2G 1 plus mu and E is equals to 3K 1 minus 2 mu। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Sir, if the material has numerically the same value for the modulus of rigidity and bulk modulus, then what is the Poisson's ratio? So यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये कंपेयर करूं, E तो सेम हो जाएगा, तो E is equals to 2G 1 plus mu should be equals to E is equals to 3K 1 minus 2 mu। So 2 plus 2 mu will be equals to 3 minus 6 mu। सो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/8 या 0.125, नॉट 0.25। सो बच्चा कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी चाहिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। सर इफ पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल्स टू 0, देन जी विल बी E/2 and k will be equals to E/3। if Poisson's ratio mu is equals to 0.5, then g will be equals to E/3 and k will be equals to infinity।
एंड इफ म्यू इज इक्वल्स टू -1 तो जी इंफिनिटी हो जाएगा एंड के विल बी इक्वल्स टू E/9। याद रहेगा, याद रहेगा। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, याद है ये सारी चीजें। चलो सर, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, ट्राई करिए। shear stress, Poisson's ratio, torque या none of these? Poisson's ratio is dimensionless। चलो आगे बढ़े। सर, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील। तो बच्चा माइल्ड स्टील के लिए 210 गीगा पास्कल, कॉपर 120, कास्ट आयरन 130, एल्यूमिनियम 72 और टिन 40। याद रखना पड़ेगा बच्चे। याद रहेगा। Sir, the ratio of transverse displacement to the distance from the lower face is called? So बच्चा, the ratio of transverse displacement मतलब आप लोगों का ये वाला, upon the distance from the lower face।
सो टेक्निकली डेल डेल बाय एल विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा, और इसी को आप लोगों का शियर स्ट्रेन कहा जाता है। सो फाई इज इक्वल्स टू डेल बाय एल, हाँ या ना? फाई इज इक्वल्स टू डेल बाय एल, हाँ या ना? ओके बच्चा, याद रहेगा। सो फाई इज इक्वल्स टू डेल बाय एल, याद रहेगा ये आप लोगों को। सो द रेशियो ऑफ द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर फेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन, याद रहेगा। अवनीश, आरआरबी कैसा गया भाई? सिक्सटी फोर क्वेश्चन की है, ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट ऑफ स्टील इज एसोसिएटेड विद डैश नंबर ऑफ साइकिल्स इन फटीग लोडिंग, आएगी आंसर की। क्या हो जाएगा बच्चे? तो यहाँ पे इन्फिनाइट साइकिल्स जो होती है एंड्योरेंस लिमिट में, जब अपन लोग बात करते हैं तो जनरली एक कंपोनेंट की लाइफ होती है फॉर द फटीग लोडिंग, इट इज 1 मिलियन साइकिल, 10⁻⁶ साइकिल्स। सो अपन लोग अगर इतने साइकिल्स अगर कंपेयर करें कि जो कंपोनेंट है उसने वर्क कर लिया, तो उसकी लाइफ जो हो गई वो इन्फिनाइट हो गई बच्चा, इट इज नॉट लिमिटेड करंट। ओके, इट इज इनफिनाइट। जब वो 1 मिलियन साइकिल्स क्रॉस कर लेता है तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि उसके इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स हो गए। सो अगर अपन लोग देखें सॉम के डेफिनेशन में, कंटेक्स्ट में, 10⁻⁶ या 1 मिलियन रिलेट्स टू इनफिनाइट साइकिल्स। होता क्या है बच्चा? फटीग लोडिंग इज बिलो मोस्टली द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। तो अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे एंड्योरेंस लिमिट डिफाइन करते हैं विच इज ऑल्सो बिलो द इलास्टिक लिमिट। सो एंड्योरेंस लिमिट इज द लिमिट ऑफ, यू कैन से, the stress or load cycles that a given component can, you can say, obviously handle for infinite number of cycles या 10⁻⁶ साइकिल। जब अपन लोग उसका ग्राफ बनाते हैं, मैकेनिकल वाले मशीन डिजाइन में बनाते हैं, तो वो 10⁻⁶ साइकिल पे एसिम्प्टोटिक ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। याद करो, लॉग लॉग ग्राफ, याद रहेगा। चलो, so abrupt change of cross section in a member subjected to the load can result in, क्या हो जाएगा? for the sudden change in the cross section, so उसकी वजह से होगा stress concentration।
So बच्चा, the ratio of Young's modulus to modulus of rigidity for the material having the Poisson's ratio 0.25 is. कैसे करेंगे बच्चा? सो बच्चा, अपन लोगों को पता ही है E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, वैल्यू डाली सर, तो E बाई जी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 0.25, मतलब 1.25 इंटू 2, तो ये 2.5 होगा, 2.5 होगा। देखो ओके, चलो सर, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड shear मॉड्यूलस आर रिलेटेड बाय। श्योर। सो E इज इक्वल टू 9G के डिवाइडेड बाय G प्लस 3 के, याद रहेगा ये आप लोगों को? E इज इक्वल टू 9G के डिवाइडेड बाय G प्लस 3 के, हाँ या ना? ये याद रहेगा आप लोगों को? ओके बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके, वेट वेट वेट, देयर इज समथिंग डिस्कनेक्ट हुआ है, वेट 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 वेट, ड्रॉप हुआ है, 1 मिनट वेट करो सब। ओके बच्चा, वॉइस आ रही है अब? ओके बच्चा, आई थिंक वॉइस आ रही है। लेट मी अपलोड द पीडीएफ। चलो ट्राई करो इस न्यूमेरिकल को।
Sir, a metal flat 40 mm wide, 10 mm thick section and 2 meter length is under compressive axial load of 40 kilonewton if the contraction in length is 1 mm and the increase in width is 0.006 mm. What is the value of Poisson's ratio? Try करिए बच्चा. वॉइस बच्चे से आ रही है? वॉइस कट तो नहीं हो रही बच्चे? क्या हो रहा है बच्चे? हो रहा है? सो बच्चा अगर आप लोग ये देखो, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन अपॉन द लीनियर स्ट्रेन. हाँ या ना? सो आप लोगों का लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? आप लोग थिकनेस से नहीं लोगे क्योंकि आप लोगों को चेंज इन विड्थ दिया हुआ है, वरना आप लोग थिकनेस लेके भी कर सकते थे. सो बच्चा चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ अपॉन द चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ. सो 0.006 अपॉन 40 एंड 2000 अपॉन 1, और इसको मैंने 6 अपॉन 1000 कर दिया एंड देन सिंप्लीफाई कर दिया. कैलकुलेशन से एक बार देख लो बच्चे जल्दी से. ऑल गुड बच्चा? सर द रिलेशन बिटवीन द ट्रू स्ट्रेन एंड द इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज, ट्राई करिए.
So बच्चा the true strain is always equals to ln L final upon L original also equals to ln A initial upon A final. अगर आप लोग डायमीटर में कन्वर्ट करो तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर वाला पावर आगे आ जाएगा. सो दिस विल बी 2 ln D initial upon D final and it is also equals to ln engineering strain plus 1. याद रहेगा. So true strain is equals to engineering strain plus 1. The correct answer is option number B. ये फॉर्मूला याद रखना है मेरे साथ. बोलिए, याद रहेंगे. ओके, चलो. Sir, the impact test is done to test dash of a material. Sir, the impact test is done to test dash of a material. It's the toughness of the material. Sir, the value of Poisson's ratio for the steel is between, try करिए बच्चा. हो रहा है. सो बेसिकली बच्चा जैसे अपन लोग बात करते हैं, द पॉइजन्स रेशियो फॉर द स्टील इज फ्रॉम 0.25 टू 0.33. याद रहेगा. 0.25 टू 0.33 याद रहेगा.
चलो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल exhibits generally a yield point? सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सो बच्चा, कौन सा मटेरियल यहाँ पे यील्ड पॉइंट शो करेगा? जो डक्टाइल मटेरियल होगा बच्चा। इज कास्ट आयरन डक्टाइल? नो सर। इज सॉफ्ट ब्रास डक्टाइल? टेक्निकली नो सर। इज ग्लास डक्टाइल? नो सर। यहाँ पे माइल्ड स्टील के आगे एनील्ड एंड हॉट रोल्ड जो लिखा हुआ है वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। समझ में आया? सो ये देखिए, आप लोगों को अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखना हो तो सॉफ्ट ब्रास का, ये ग्लास का, ये कास्ट आयरन का और ये हॉट रोल्ड स्टील का, द ओनली मटेरियल which is showing the ductile behavior from all these four is the hot rolled mild steel. याद रहेगा बच्चे? ऑल गुड। चलो इसको ट्राई करो। सर, इफ g अपॉन e इज इक्वल टू 0.4 द पॉइजन रेशियो विल बी, ट्राई करिए। बच्चा ट्राई करो। सो बच्चा, यहाँ पे आप लोगों का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू।
सो ई बाय जी इज इक्वल टू 2 into 1 plus mu. सो अगर g अपॉन ई 0.4 है तो ई अपॉन जी कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, हाँ या ना? सो म्यू कितना हो जाएगा? 0.25. देख लो एक बार. ऑल गुड. Sir, the unit of modulus of elasticity is same as that of. Sir, the unit of modulus of elasticity is same as that of. क्या यूनिट है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. फोर्स का न्यूटन होता है तो फोर्स वाले ऑप्शन निकल गए. प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी होगा. सर, स्ट्रेस, प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी याद रहेगा? याद रहेगा? चलो. Sir, a uniform straight rod is subjected to an axial rod. Which of the following statement is correct? क्या हो रहा है बच्चे? इसके फॉर्मूला याद है आप लोगों को? इसका फॉर्मूला याद है आपको?
क्या कर सकते हैं? सो बच्चा, लेट मी शो यू। सर ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड। तो आप लोगों का नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन क्या हो जाता है? सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सर शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। अब मैक्सिमम शियर के लिए अपन लोगों को ये देखना जरूरी है, सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा ये कब पॉसिबल है? व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग डालोगे, सॉरी ये साइन 90 होना चाहिए, नॉट साइन 45। 45 इंटू 2 होना चाहिए, तो टाउ मैक्स विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2। So angle will be 45 degrees, so it induces the maximum shear stress onto the plane inclined at an angle of 45 degree to the axis of the rod. याद रहेगा? ऑल गुड बच्चा? So substances in which the measured properties are independent of direction, क्या हो जाएगा भाई? सो बच्चा, इट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक मटेरियल या आइसोट्रोपिक सब्सटेंस, है ना? द प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, और अगर प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन तो क्या हो जाता बच्चे? होमोजीनियस होता। चलो इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो बच्चा। When a rod of circular section is fixed at one end and subjected to an axial load of 500 Newton, the deflection under the load is found to be 2.4 mm. What will be the amount of deflection under the same load if the diameter of the rod is doubled and the length is reduced to half of the original length? हो रहा है सॉल्व? कैसे करेंगे बच्चा? सो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैन आई शो यू द सॉल्यूशन? 1.2 mm is wrong बच्चा। 1.2 mm is totally wrong।
सो बच्चा वी नो दैट वेरी वेल, आप लोगों का डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए, so this will be equals to p into l upon pi by 4 d square into e, so delta l is directly proportional to l by d square, हाँ या ना? So delta L1 upon delta L2 will be equals to L1 upon D1 square into 2 times D1 square, because the diameter is doubled and the length of the rod is reduced to half, so this will be L1 by 2. Simplify करा, so delta L2 is coming out to be 0.3 mm, याद रहेगा? All good बच्चा? चलो sir, the toughness of the material means, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, मे बी आप लोग आंसर दे पाओगे. So बच्चा, the toughness of the material indirectly means the measure of the strength of the material, although ये most appropriate नहीं कहूंगा मैं, but still आप लोगों का most, you can say correct नहीं कहूंगा, appropriate ही कहूंगा, sorry. Okay, चलो. Sir, the percentage reduction in the area in case of cast iron when it is subjected to the tensile test is in the order of, try करिए बच्चा. क्या होगा बच्चे? कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल, क्या वो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया शो करेगा? नो सर, अ ब्रिटल मटेरियल विल नॉट शो अ परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, सो दिस विल बी 0%, याद रहेगा. Now this is the most appropriate question. Impact strength is correct of the material is an index of, try करिए. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आता हूं आप लोगों के सामने.
सो सॉरी बच्चा टू कीप यू ऑन वेट, ओके, एक ही मिनट का थोड़ा सा छोटा सा काम था. सो द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज द इंडेक्स ऑफ, इट इज द इंडेक्स ऑफ टफनेस. याद रहेगा बच्चे, याद रहेगा. चलो सर, इन केस ऑफ फटीग लोडिंग, in case of fatigue loading of material, the stress level corresponding to the infinite life is known as. बच्चा इस क्वेश्चन के बाद वाइंड अप करें, आज और भी क्लासेस है अपनी. सो बेसिकली इन केस ऑफ फटीग लोडिंग ऑफ मटेरियल, द स्ट्रेस लेवल corresponding to infinite life is known as the endurance limit of the material. याद रहेगा बच्चे, it is known as the endurance limit of material. so बच्चा इसके बाद की क्लास में आइए आप लोग, ओके okay? आज इस क्लास को इतने तक ही रखते हैं अपन लोग, ओके okay? जो लोग अनअकैडमी प्लस पे नहीं है जल्दी से आप लोग प्लस पे आ जाइए, ओके. यू कैन ज्वाइन यूजिंग माय कोड वैद्य 100. आज लास्ट डे है, आप लोग 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हैं 4 मंथ्स फ्री एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 7499. 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हैं 3 मंथ्स फ्री एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 6499. एंड 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हैं 2 मंथ्स फ्री एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 4999 यूजिंग माय कोड वैद्य 100. आज रात 12 बजे ऑफर एंड हो रहा है, तो जल्दी से प्लस पे आ जाइए, ओके. द दृष्टि बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर यू बच्चा 24 फेब से, और मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ प्रैक्टिस बैच फॉर सीबीटी 2. याद रहेगा. सो अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेजर एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JE, Unacademy RRB JE, Unacademy State AJ top ranker. And don't forget to join our Telegram community for SSC JE in all state exam. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram. Bye bye.